Welcome all of you to the first lecture of set theory. Today we will discuss first chapter of your 11th syllabus, set theory, chapter 1. From 10th class, all of you know what is set. A set is collection of similar type of objects or well-defined objects तो सेट र मीनिंग पिले एडा होची उडे कलेक्शन कहार कलेक्शन सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टाइप रो विभिन्न जिंस थिबो नले वेल डिफाइंड थिबो तार कलेक्शन होची सेट पॉइंट 1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट are also known as elements or entries. Objects माने पिले सेडा को आमे कहूचु elements of the set or entries of the set. Okay. Second, well defined object माने कौन? Well defined माने पिले तम माने गोटे ऑब्जेक्ट ए कलेक्शन रे बिलोंग करूछि कि नहीं आराम रे डिसाइड कर पारियो. इट इज वेल डिफाइंड मीन्स इट इज पॉसिबल टू डिसाइड वेदर एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द कलेक्शन और डज नॉट बिलोंग्स. गोटे जिनसटा ए कलेक्शन रे अछि कि नहीं जदि आराम रे जानी होछि माने सेडा होछि वेल डिफाइंड. Okay, for example, collection of all odd natural numbers clearly it is a set because odd natural number means similar type of numbers, that is 1, 3, 5, 7, ... Second, collection of all political parties of India. It is also a set because it also consists of similar type of objects. Political parties means similar type of things. For example, BJD, BJP, CPI, these parties of India means similar type of objects. It is a set. Collection of all CBSE schools of Barampur. It is also a similar type of objects. CBSE schools. So it is a set. Fourth, collection of all good students. Collection of all good students of class 11th. It is not a set. Good student mane it is not well defined because it apile kothre good अछि mention करिनि से. Good माने परसेंटेज रे भी गुड हे परियो, मैथमेटिक्स रे गुड हे परियो, फिजिक्स रे गुड हे परियो, माने को क्राइटेरिया रे गुड अछि डिमेंशन है सेथ में. इट आर नॉट वेल डिफाइंड. इट इज नॉट ए सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड.
It is not a set. Best cricket batsman माने पिले को ground रे best एट mention है. Average रे भी best है परियो. Strike rate रे भी best है परियो. So different type रे best अच्छी batsman रे भी. So collection is not possible. Okay. तो example गुड़ा अगर देखो पिले जोड़ी adjectives थिबो good, best एवढा का set होनी कहना एवढा का properly define करूनी से. माने कोथिरे गुड मेंशन करूनी कोथिरे बेस्ट मेंशन करूनी से सेट हम. सो वेल डिफाइंड र माने हला से वर्ड टा प्रॉपर्ली डिफाइन हेतियो. गुड माने गुड र परसेंटेज गुडे मेंशन हेतियो वाला सेट. बेस्ट माने कोथिरे बेस्ट मेंशन हेतियो. स्ट्राइक रेट रे के एवरेज रे कोथिरे माने सेट हम. So this is all about the definitions of set. Clear? Set means it is a similar type of collection or well-defined collection. Object means called elements or entries of the set. Okay, next. Point 1. Sets are usually denoted by capital letters. Sets रा symbol गुड़ा का पिले normally capital letter A, B, C. Second, but its elements are denoted by small letters. तो पिले again I repeat, set means represented by capital letter, but its objects, that is elements, are represented by small letters. Clear? Third, if X is an element of A means set, then it is represented by X belong to A. If X is one of the element of set A, then we can write X belong to A. Clear? Now we will discuss different forms of set. There are two forms of set. One of them is called listing form of set and another is rule form of set. Listing method is also called roster or tabular method of set. What is listing method? In this method, elements are written within curly bracket, that is chain bracket. One by one, separated each other by comma. List form रा meaning होची पिले elements गुड़ा का one by one तम माने लेखिवो within chain bracket and they separating by comma symbol. For example, collection of even natural numbers less than 20. Even natural numbers less than 20. So set a symbol curly bracket. Even natural number means 2 to start. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Less than 20. Man up to 18. So is your curly bracket to set a symbol. List form means you have to write the elements one by one. You write one by one within curly bracket called roster or list method. Collection of vowels of English alphabet. Curly bracket vowels A, E, I, O, U.
So this form of writing the elements one by one is called roster form. Now we discuss rule form, set builder method. In this method, elements are written within chain bracket followed by a specific rule. माने पिले एठी भी एलिमेंट गुडाक चेन ब्रैकेट अंडर रे लिखिबा but they follow by a specific rule. You cannot write one by one. In rule method you have to write a rule. For example, same example, collection of even natural numbers less than 20. माने पिले rule method रे हमें कौन लिखिबा देखो x such that x माने गोटे नंबर टा पिले x is equal to 2n, even माने पिले 2n, 2 रो मल्टीपल, n is natural number, n is less than 10 माने एडी पिले वैल्यू डा 1 पुट हबो 2 3 सब पुट करियो अप टू 9, 9 पुट कले 18 आसला, लेस देन 10 माने कोन अप टू 9, 1 पुट कले 2 आसियो, 2 पुट कले 4 आसियो, 9 पुट कले 18 आसियो. तो ए जो फॉर्मेट ता पिले x is equal to 2n एडा को हमें कहूछु रूल फॉर्म. सेकंड एग्जांपल, collection of vowels of English alphabet is equal to 1 by 1 दा होचे पिले लिस्ट मेथड, बट आमे जे देमते लिखिवा x such that x is an element, x is a vowel, that form is called rule format. Another example, collection of 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 याको पिले आमे रोस्टर फॉर्म रे एबे लिखिचंती, एडा को रूल फॉर्म कले कोन हबो देखो x such that x is n by n plus 1 एमिति फॉर्म रे अछि पिले n by n plus 1, n da 1 n plus 1 2, n da 2 n plus 1 3, n da 3 n plus 1 4. So where n is natural number, एडा पिले डॉट 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 अछि तेनु आराउ किछि रेस्ट्रिक्शन नाही. Natural number 1 put kale 2, 2 put kale 3, 3 put kale 4, n by n. This is the rule form. Another example, 1, 2, 4, 8, 16. 16 रे स्टॉप कर देली पिले. ये वर्तमान हमरो रोस्टर मेथड रे अछि. आको हमें रूल कले कोन हबो टिके वेरीफाई करिया. That is equal to x such that x is 2 to the power n. को फॉर्म रे पिले अछि 2 to the power n, where n is whole number माने एडा 0 रु स्टार्ट हला पिले 2 रो पावर 0 मतलब 1, तापर एडा 2 रो 1, 2 रो स्क्वायर, 2 रो क्यूब, 2 रो फोर्थ, n should be less than equal to 4. तेनु वर्तमान हमर n डा पिले 2 रो पावर 0 रु स्टार्ट हे छै, एडा 2 रो पावर 0 वाले 1, 2 रो 1, 2 रो स्क्वायर, 2 रो क्यूब, 2 रो फोर्थ अप टू 4 जाइन चलछि. तो एमिति तमे जदि 1 by 1 लिखियो एडा कहूछु लिस्ट और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. जदि एक्स्ट्रा हमें गुटे रूल अप्लाई करिया एडा कहूछु हमें रूल फॉर्म ऑफ सेट. सो दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट. ओके, लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ सेट. टाइप 1 एम्प्टी सेट or void set or null set. यार मीनिंग विल very simple. A set containing no any elements is called empty set. A set containing no elements is called empty set. किछि element नथिबो माने empty set. It is denoted by
symbol phi आर स्वेलिंग टा पिले phi empty रो symbol होची पिले phi. For example, in roster form, that means rule list form, empty set is equal to blank curly bracket. एमती पिले blank वाला curly bracket अच्छी मैंने empty set इधर होचे roster form. In rule method, empty set is equal to x such that माने x डा उड़े element पिले such that कौन आर property डा थियो पिले ना उड़े impossible जिन्स डे थियो. X is a day of a week having 25 hours. एमती गुटे डे कुह पिले मते week रा जो थे कि 25 hours थियो बोले एमती तो किछ नहीं so empty. X such that x is a natural number less than 1. गुटे नेचुरल नंबर कुह पिले जे कि लेस देन 1 थिबो 1 ठू कम थिबो सेमति तो किछ नाही एम्प्टी. x such that x is a real number x not equal to x. आमे समस्ते जानि चंदी पिले x डा इक्वल टू x x equal to x. X not equal to x means it is impossible. So impossible means it is empty. X such that x is wife of Chief Minister Nabin Patnaik. नवीन पटनायक रो वाइफ गुडा को आमे जदि पिले कलेक्शन करिवा ओ नवीन पटनायक तो अनमेरिड तो तार वाइफ को कलेक्शन कले कौन हबो एम्प्टी सेट. ऑल इम्पॉसिबल टाइप ऑफ कलेक्शंस आर एम्प्टी सेट. ओके. टाइप 2 इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट आर मीनिंग पिले ए सेट कंटेनिंग only one element is called singleton set. Only one element called singleton set. Clear? For example, curly bracket A. Curly bracket पिले सबले दउथो curly bracket 1. आउटे खास एग्जांपल हला पिले curly bracket 5. बहुत पिलाने ढूंढे मिस्टेक कर दियंते जे सर कौन फरक अछि ना ए जो लिखली पिले मु 5 एडा होची एम्प्टी माने ब्लैंक बट कर्ली ब्रैकेट रे 5 माने एडा होची एलिमेंट वन एलिमेंट सिंगलटन सेट. तेणु फरक टा कौन रहला बुझिले ना पिले दिस इज एम्प्टी बट दिस इज वन एलिमेंट. कर्ली ब्रैकेट अंडर रे अछि माने वन एलिमेंट सिंगलटन सेट रेडा जीवो. नेक्स्ट एन-टर्न सेट आर पिले खास कथा हो जे टर्न माने नंबर ऑफ एलिमेंट. एन-टर्न सेट माने ए सेट कंटेनिंग n elements is called n-turn set. n different elements थियो n-turn set. For example, x रो power 1, x रो power 2, x रो power 3 dot 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 x रो power n. Power 1, power 2, power 3, power n माने आर टोटल एलिमेंट काउंट कले केतरा हला पिले n. So it would n-turn set. Another example, 1 square, 2 square, 3 square dot 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 n square. यार पिले n एलिमेंट्स अछि यार भी n एलिमेंट्स अछि n एलिमेंट्स अछि माने सेटा को हम माने कहूछु n-turn set. ओके. नेक्स्ट cardinality of a set or order of a set. Cardinality means number of different elements present in the set.
तो cardinality or order of set means number of different elements present in that set. माने repetition element गुड़ाक count हबनी, only different element गुड़ाक count हब. For example, suppose A equal to A means set X such that X is a letter of word mathematics. Mathematics word रपिले लेटर गुड़ा को नहीं कि आमे गुडे सेट फॉर्मेशन करिया. ले कौन लेटर अच्छी डाको M A T H E तापरे पिले M A T रिपीट अच्छी I C S जोड़ा रिपीट अच्छी ताकू केबे सेट रे लिखा जीवनी. तो ये कौन कितना लेटर अच्छी पिले 8. Therefore N of A equal to 8. आउटे पिले जिनसेटी मु मिस करी गली. Cardinality is denoted by mode of A or N of A or O of A. Cardinality रो पिले symbol होची number of element रो symbol होची mode A, N of A, order of A. एवढा सब number of element रो symbol. So सेति में मुझे लिखिले N of A is equal to 8. माने आरा number of elements होची 8. Clear? So what is cardinality or what is order? It means number of elements present in the set. It is denoted by mode A or N of A or order of A. In cardinality, repetition elements are not counted. So there are two important points of a set. Point 1. In a set, elements never be repeated. Elements गुड़ाक केबे रिपीट करिके लेखा जीवनी. Second point, a set is independent of order of writing the elements. Independent of order of writing the elements माने 1 2 3 लिखिले जो सेट पिले 3 2 1 लिखिले सही सेट 2 1 3 लिखिले भी सही आएगा. माने एडा ऑर्डर को डिपेंड करू नाही. तमे छोटो रु बड़ लिखिले जहा बड़ रु छोटो लिखिले भी से जेमति लिखिले भी तार मीनिंग गोटे पिले. इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर. एलिमेंट समान थिले हला पिले तमे जेमिति लिखिले भी चलिवो. Clear? Next type is finite set and infinite set. Very simple. A set is said to be finite if it contains countable number of elements. Finite set means it consists of countable number of elements. Finite number of elements. For example, 2, 4, 6, 8, 10. It will be a finite set because its cardinality is 5, countable. Infinite set. Infinite set is contains uncountable number of elements. A set is said to be infinite if it contains uncountable number of elements. माने finite elements थे finite set, infinite elements थे infinite set. For example, 2, 4, 6, 8, 10, dot, 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 dot. Uncountable. The infinity set. Clear? Next type is similar or equivalent sets. एडी खास बात है लापिले सिमिलर सेट माने सेम सेट बोली केबे भाबिबनी. सिमिलर सेट रो माने हला सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Two sets are said to be similar
or equivalent if they contain equal number of elements. माने पिले दुईटी सेट रे जदि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थिबो ताहले सेडा को आमे कहूछु इक्विवेलेंट और सिमिलर. दैट इज n of a equal to n of b. माने number of element in a is equal to number of element in b. Same cardinality. That implies a is similar to b. It appeal symbol da similar. A similar b means they have same cardinality, same number of elements. For example, suppose a equal to 1 2 3, b equal to xyz. ए एग्जांपल गुडा का पिले क्लियरली डिफरेंट अछि. एटा कोन सेम नो, बट ए रो कार्डिनलिटी होची 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, b रो कार्डिनलिटी होची 3 नंबर ऑफ एलिमेंट सेम अछि. देयरफॉर a इज सिमिलर टू b. क्लियर? वेरी सिंपल. इक्विवेलेंट सेट माने इक्वल बोली केबे भाबिवनी. आर माने हला नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग कला बेले सेम थिबार अछि. क्लियर? सबसेट. व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? सेट A is subset of B within brackets A subset B. एटा पिले सबसेट सिंबल ना. If all elements of A are in B, माने पिले ए रे जदि सारा एलिमेंट्स बी रे थिबो ताहले सेडा होचे सबसेट. ए सबसेट बी. तो व्हाट डू यू मीन बाय ए सबसेट बी? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर मस्ट प्रेजेंट इन बी. हेले पिले ए जो डेफिनेशन ना म कहिली एठी इक्वल भी हे पारे, सेथबे एठी इक्वल सिंबल अछि. ए रो जदि सब जाग एलिमेंट बी रे रहिला सेडा मे बी इक्वल हे पारे, मे बी बी रे आउरी एक्स्ट्रा थाई पारे. सेथिबे सिंबल ला एडा हबो पिले. ओके, केते बही रे सबसेट रे सिंबल एडा दे देछि, बट एडा रो ए सिंबल ला ठीक काहे कि ना ए रो एलिमेंट गुडा को बी रे थिला समय रे मे बी इक्वल भी हे पारे, मे बी बी रे अधिक भी थाई पारे. फॉर एग्जांपल, write all subsets of first bit 1 2 3. आर पिले आमे सबसेट फाइंड करिया. सब माने ताटू स्मॉलर थिबो और सेट माने कर्ली ब्रैकेट. सबसेट फाइडा गुडे सबसेट पक्का हो बिकॉज फाइडा होची एम्प्टी. एम्प्टी शुड बी सबसेट ऑफ एवरीथिंग. आउ सिंगल सिंगल नेले भी सबसेट हबो 1 2 3. एउडा का तो पक्का सबसेट हबो काइना एउडा का अंडर रे अछि. डबल टा भी हबो 1 2 2 3 3 1 सब जा कर्ली ब्रैकेट पिले. एउडा भी सबसेट हबो अंडर रे अछि. सेम सेट टा भी सबसेट हबो काइना पिले सेम सेट टा भी सबसेट हे परियो. एडा भी अंडर रे अछि ना. डेफिनेशन तो सैटिस्फाई होछि ना. तो एथिरो पिले हमें देखिले सबसेट रे स्मॉल इज 5, सबसेट रे बिग इज इटसेल्फ. एडा होछि बिग सबसेट, एडा होछि स्मॉल सबसेट. सेकंड ए बी. आर पिले सबसेट फाइंड करिया. कोन कोन सबसेट अछि ना. स्मॉलेस्ट सबसेट होछि 5, तापर सिंगल सिंगल ए, तापर बी, तापर इटसेल्फ. एवडा सब सबसेट.
एडा भी अंडर अच्छे, एडा भी अंडर अच्छे, एडा भी अंडर। स्मॉल सबसेट टा किए पिले फाई अच्छे, बिग सबसेट इटसेल्फ वन र सबसेट पिले बाहर करिया ना फाई वन दीडा सबसेट अच्छे। फाई र सबसेट पिले बाहर करिया ना फाई दा तो सबुठ स्मॉल तार सबसेट होची इटसेल्फ फाई। ए जो सब सबसेट रो डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कशन कली पिले यार कंक्लूजन कौन हमें ड्रॉ कले नोट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइडा पिले जहाँ रहले भी सबसेट हे पारिबो which is also called smallest subset। Second, every set is subset of itself। गोटे सेट टा पिले तार आगा सबसेट हे पारिबो कहीं ना ए रो एलिमेंट गुडाक ए रे अछि। सबसेट माने फर्स्ट सेट रो एलिमेंट गुडाक सेकंड सेट रे थिबो तो ए रो एलिमेंट गुडाक ए रे अछि सो सबसेट हे पारियो। थर्ड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू n then total number of subsets equal to 2 to the power n। गोटे सेट रे पिले जदि n एलिमेंट्स थिबो n थिबो ताहले तार नंबर ऑफ सबसेट होची 2 रो पावर n। यू सी एठी पिले 3 एलिमेंट्स अछि तार नंबर ऑफ सबसेट को काउंट करियो ले 2 टू दी पावर 3 हेथियो पक्का 2 रो पावर n 1 2 3 4 5 6 7 8। एठी पिले 2 एलिमेंट्स अछि तार सबसेट काउंट कले पक्का 2 टू दी पावर n माने 2 स्क्वायर हबो 4। तेरो नंबर ऑफ सबसेट रो फार्मूला डा होची 2 टू दी पावर n। n माने number of element present in the set। Now we will discuss another concept which is called proper subset। तार सिंबल डा पिले proper subset कौन डिफरेंस पिले आर फरक टा को स्टडी करो। proper subset माने कौन एडी इक्वल सिंबल डा नहीं पिले देखो एडा को जन proper subset। Set A is proper subset of B within bracket A proper subset B if all elements of A are in B and A not equal to B। तेनु proper subset रो मीनिंग होची पिले ए रो सबु जाक एलिमेंट बी रे थिबा सहित इक्वल हे न थिबो मतलब बी रे ग्यारंटी किछि गुटे एक्स्ट्रा नंबर थिबो सेडा प्रॉपर सबसेट। बट सबसेट को हमें जति देखिबा यार मीनिंग होची ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी माने बी डा इक्वल भी हे पारे और बी रे एक्स्ट्रा भी थाई पारे से इक्वल सिंबल अच्छे। बट एडार माने हला ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट प्रेजेंट इन बी आउ ए नॉट इक्वल टू बी माने 100% बी रे किछि ना किछि एक्स्ट्रा अछि बोले सेडा होचे ए प्रॉपर सबसेट बी। फॉर एग्जांपल राइट all proper subsets of first bit 1 2 3 आर पिले हमें प्रॉपर सबसेट गुडा को फाइंड करिया। प्रॉपर सबसेट माने आठू स्मॉल पक्का हबो आ को इक्वल हबनी એટલે फाइडा तो गुडा स्मॉल सिंगल सिंगल बीजियो डबल डा भी स्मॉल हबो बट पिले ट्रिपल डा कोई लिखियोनी ट्रिपल डा इक्वल हे जियो एडा लिखियोनी पिले एडा इक्वल हे गेला माने प्रॉपर सबसेट हबनी। प्रॉपर सबसेट को जी इक्वल हे नथियो
एडी किछि ना किछि एक्स्ट्रा पक्का थियो तेनु एउडा सब प्रॉपर सबसेट काहे ना एडी एक्स्ट्रा अछि हेले ए गोटे आगा हलानी बेले सेकंड राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी 5 ए सिंगल बी सिंगल एडा प्रॉपर हो बेले काने आकु आकु देखिले एक्स्ट्रा अछि आकु आकु देखिले एडी एक्स्ट्रा अछि बट एडा बेले प्रॉपर होबनी एडा इक्वल है इक्वल दा प्रॉपर होबनी सो कंक्लूजन कौन मिलला बेले हमको एठी यू सी आमे बेले एठी कहिथिले ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ काहे ना आर एलिमेंट गुडा एठी अछि तो एबे पॉइंट आसला बेले ए सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ हबनी बेले केबे हेले काहे ना एदिडा इक्वल है इक्वल इज नॉट प्रॉपर सबसेट माने एडी किछि एक्स्ट्रा दरकार एठी समान हे गला बल हबनी पॉइंट 2 आमे पिले एडी कहिथिले फाइ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट किंतु एबे कोन कहया सुनो फाइ इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइ इक्वल है गला फाइ रो प्रॉपर सबसेट हबनी बट पिले फाइ इज सबसेट ऑफ फाइ सबसेट है पर सबसेट इक्वल थिले चलियो इक्वल अछि बट नॉट प्रॉपर पॉइंट 3 if a set containing n elements then number of proper subsets equal to 2 to the power n minus 1 number of proper subset पिले आमे जदि बाहर करिबा बोले सबसेट रो फार्मूला रे मु लिखि देली -1 कोन में -1 लिखि देली बिकॉज प्रॉपर सबसेट माने सबसेट भली आगा खाली ए गोटे प्रॉपर सबसेट होनी इक्वल है जाउछ सेथि में -1 तनो -1 कम में लिखा हला पिले एक्सेप्ट ए आमे जदि पिले ए रो प्रॉपर सबसेट बाहर करछंदी बोले तार नंबर ऑफ सबसेट रो फार्मूला डायति की -1 काई गेला ना आईडी सेट इटसेल्फ को हमें कट कर देले आकु बाद दे की लिखले काई ना एडा प्रॉपर सबसेट हबो नी these are the important points example suppose a equal to 0 1 2 3 4 first question number of subsets is equal to dash ना फार्मूला पिले 2 to the power n एटी पिले n डा अछि 5 पांचटा एलिमेंट अछि n माने नंबर ऑफ एलिमेंट 5 सो 2 to the power 5 equal to 32 number of proper subsets equal to dash so 2 to the power n minus 1 काहे ना प्रॉपर सबसेट माने a रो प्रॉपर सबसेट a हे परियन सो -1 2 रो 5 -1 कौन में -1 हला पिले एक्सेप्ट ए काइना एडा ए रो प्रॉपर सबसेट हबनी तेनु गोटे लेस हे गला 31 नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स इक्वल टू दिस सबसेट रो फार्मूला पिले 2 to the power n नॉन एम्प्टी बोले -1 5 एम्प्टी अछि तो नॉन एम्प्टी मत दरकार माने एक्सक्लूडिंग 5 तेनु 5 को एक्सक्लूडिंग कर देले पिले -1 है 2 रो 5 -1 fourth number of non empty proper subsets equal to this number of subset तो पिले 2 to the power 5 -2 है जो कहीं ना नॉन एम्प्टी बोले 5 डा कट है गला प्रॉपर सबसेट बोले ए डा कट है गला ए डा ए रो प्रॉपर सबसेट हबनी सेति में -2 एक्सक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग ए सो -2 32 -2 30 एडा होची पिले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स एक्चुअली पिले आज हम एति डिस्कशन करथिबा नेक्स्ट क्लास रे भी आउट के थ्योरेटिकल अछि
सेट रो फर्स्ट 2 क्लासेस होछि टिके थ्योरेटिकल, थर्ड क्लास टू टिके प्रॉब्लमेटिकल स्टार्ट हो। ओके, तम माने वर्तमान तम पाखरे जो बुक अछि तार भी फर्स्ट चैप्टर टा टिके ट्राई कले करि परिबो। ओके, थैंक यू।